gathered here. Thank you so much for coming. So I believe everyone here must be, aware about the latest AI technologies, and we all have mixed viewpoints about it. So today we have gathered here to know more about this topic and how Instabase is solving the most complex problems of unstructured data and gives you insights from it instantly. For that, we have the founder and CEO of Instabase, Mr. Anant Bhardwaj, with us, who will take you through a tour of what Instabase offers to its customers and clients across the world. About Anant, I'll just say two lines. Like, Anant completed his basic education from Pune. After that, he did his engineering, and then he moved to Stanford for his master's. And while being a student at MIT for his PhD, he started Instabase in 2015, which became a unicorn in 2019 with a $1 billion valuation, and it is currently a $2 billion valued company. So we have Anant Bhardwaj with us, the founder and CEO of Instabase. Over to you. Basically, just going to take you through sort of like a quick tour of how Instabase started, who are our customers, and of course then a quick demo of what the product looks like and how this could be relevant from the context of India, especially given like how it can transform a number of different industries, and of course, the different functions and processes within the government and so on. So I think we'll move to the next slide. So before this, I was a PhD student at MIT, dropped out around end of 2015 to start this company. And our mission is to turn the world's unstructured data into insights instantly. What does this really mean is that we believe that any new breakthrough or any big discoveries that will happen over the next coming decades is going to be from the understanding of unstructured data. Whether it is going to be in the field of biology or medical science or space or physics, it's going to be by the analysis of the vast amounts of unstructured data. So far, we have only been able to make sense of data that can nicely be represented in table format, right, rows and columns. And now with AI, what you can do is you can take like a lot of data that is just like completely in unstructured format, like audio, video, images, files, and so on, and you can understand them. We basically were valued at about $2 billion, 300+ person company across the globe. We are based primarily, started in the United States, so offices in San Francisco, Menlo Park, New York, and then we have offices in London, in UK, and in Bangalore, which is in India. Previous slide. We work with a number of large enterprises, a number of large organizations across the world as our customers. So you can see a lot of names that you might already be familiar with. So big banks like JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, HSBC, Standard Chartered, and so on. Then we have a number of like large insurance companies like AXA, Northwestern Mutual, a number of tech companies like Uber, for example, like whenever Uber onboards a driver, like they have to process a bunch of paperwork, right? Their driver license, a bunch of their car, insurance paperwork or car paperwork, all of that is done through Instabase. And then, the company like Colgate, for example, whenever they do invoices and those kind of things, they use Instabase. So if you move to the next slide, this is the history. So we started around August 2015. Before this, I was a PhD student at MIT. Since then, a number of prominent investors have gotten involved with Instabase. So Andreessen Horowitz, so Greylock and NEA did the seed round, Andreessen Horowitz Series A, Index did Series B, which was a $1 billion valuation round, and then we did the last round, which we announced earlier this year, and that was a $2 billion valuation. So at the very core, which I talked about, what we help you do is we help you convert all of these unstructured information into some decision-making ability immediately. Like whenever you apply for, passport or opening like house property paperwork or submitting electricity bill, a lot of documents you submit, right? And some humans have to go and understand it. What if machine or artificial intelligence can understand them automatically? That would be super cool, right? So that's what we help basically organizations do. So I'll just give you a quick demo of like how this all works. So if you move to the next slide. So you're going to basically see like how this can be applied in real life.
So this is what the website looks like. It's called aihub.instabase.com. This is available in the sense that any one of you can go and log into this website, and you can log in with your email. So it's like freely available for anyone to play with up to a certain point, and after that you can pay more money to use more. So I'll just show you like how easy it is to use this. So for example, let's say somebody submits a passport, and you have to figure out what the details are. Right now, somebody has to manually look at this passport, enter this information in the system. Right? Like that's a lot of work. You should be able to just simply say, extract all the information from this passport in table format. And that's it. Artificial intelligence is going to go look at this particular passport and should be able to give you all the answers immediately. We'll just wait. As you can see, the answer is coming. It's creating a table for you, and then it's sort of like figured out all of that stuff. So currently, like you could pass this to underlying whatever other systems are, or Excel sheet, or whoever we are using. But the whole idea is that AI basically looked at this, understood every single thing, and extracted. Now I could also ask them questions, which is like, when does this document expire? Right? Or things like, which country does this person belong to? And when you ask these questions, artificial intelligence will be able to go and understand these things. Like you say, like, which country does this document belong to? So what is happening in these cases is, instead of like humans needing to look at each stuff, machines or artificial intelligence can do it by itself. So same way, like for example, let's say I have a pay stub, and I have to figure out like how much loan this person needs to get. Now this is a pay stub only for like 2 weeks, as you can see here, right? Between August 15 to August 28. But now if somebody applies for a loan, for a bank to give a loan, they need to understand how much money you make per year. Now somebody has to manually enter, do all the calculations. That's like a lot of work. You should be able to ask AI, which is like, hey, go and extract the net pay and the pay period, and use that to calculate the annual net pay. Okay, that's what I want to know to figure out how much loan this person could be given. Now this artificial intelligence system is going to take your question, understand all of this, and say like, net pay is this. Since the pay period is 2 weeks long, there are 52 weeks in a year. That means 26 times this person is going to get paid. Therefore, annual net pay is just multiplied by 26, and therefore the answer is this. Right? So what you're basically seeing is a lot of things that currently require human to be able to do this and understand, machines can do it. Like for example, like this is my personal document. So like this is Aadhaar card. I should be able to simply say the same thing, right? Which is extract all the information, let's say in a table format. And this really doesn't matter like what format documents is written in, what language it is written in. And as you can see here, right, like basically all the key information it would be able to get me. Now let's see, like, let's get into slightly more complicated stuff, right? Currently what you saw was simple things. So as soon as we start getting into more complicated documents, let's say I am investment bank, and I'm looking at this annual report of large companies like Apple. Apple is one of the biggest companies in the world, and I want to analyze like how much each product of Apple is making. Who wants to read this 80-page long document? That's like a pretty long document. You have to understand like so much English. That's like a lot of work. So I should be able to say, extract the net sales of all different products of Apple, let's say for the last 3 years. For the last 3 years. So if I do this, now this machine or artificial intelligence will be able to read this 80-page long document in real time, and should be able to tell you like, here is the answer. And not just it's telling you where the answer, it basically tells you where this is reading from. So it says, I read this whole document, and here is the page from which I got this answer. Now this is cool, but let's say I want to, plot this as a graph. So plot this as a graph where I want to compare each product over 3 years. So you say like, hey, this is cool, you gave me the table, but now I want to create a nice visualization where I can really understand in a very visual way what this looks like.
So you can see here now, it basically created the 3 years, and within each year it created a plot so that you can see how each of the products are doing. Right. Now, let's say, what if you want to forecast what the Apple is going to do over the next 3 years? Okay, that is more interesting, right? If they're going to do better, then I should invest. Otherwise, I should not invest. So you can, in fact, like go pretty deep. Like you can do things like, you can say like extract this, and you can say, look, you know, you have this number, so calculate CAGR. I don't know if you've heard the word CAGR. CAGR basically means compounded annual growth rate, like how much the growth of a company is compounding over the year, because that gives you a good sense of how much they're going to grow over the next year. You say calculate CAGR for each product, and now you can say, assuming the same growth rate, forecast the net sales of Apple for the next 3 years. Because now I'm interested in whether I should invest in this company or not. So I need to understand how much money they're going to make over the next 3 years. And you can also say, like, you know, print the results at each step. So it says, like, don't just give me the answer, tell me the step by step, and give me the results step by step. So now this is thinking, this AI, and as you will see, it said like, hey, here is the last 3 years. Here is my calculation of CAGR, and I use this formula. Ending value divided by beginning value raised to 1 divided by number of years minus 1, and here is the CAGR, and now I'm going to apply this growth percentage to forecast 2023, 2024, and 2025. So you get this, like, how useful this can be in terms of solving some very, very hard problems that earlier would require a ton of work. Now let's talk about media, because I think you all are from media, like how it could be useful for you all, right? Currently we looked at like how this can be useful for like passport office and banks and insurance and government and analysts and those kind of people. So I actually have really good examples from like news articles, and then we will go legal and all that. So let's say like, you know, some circular came from Maharashtra government in Marathi, and you don't understand Marathi. You have to write like in English. That is like you have to hire somebody who understands Marathi, tells you what the news is, and then you write. That's like a lot of work. I don't understand Marathi, but if I have to write in English, I should be able to say like, hey, you know, read this report from government and write a news article for me. You can also say, I'm a reporter at, give me one publication that I should use, G News or let's say G News. Read this report from government and write a news article in English for that English that covers all the important points from this report. So now you're basically saying like, hey, you know, I'm a reporter, I want to write a report, here's the government report, and he basically said, yeah, here is the English report for you. So in real time, basically, and I think what the government is announcing is, they're basically saying, here is the class 10 board exam result, here is the website you can go, and here is how, you know, where it will be available and all that stuff. Here is you can read for the contact. Now, what if you want to write in Hindi? You can also say write this in Hindi or write in Tamil. So it doesn't matter what language you want to basically ask questions, what document language is, it doesn't matter. You can basically just solve all those in real time. So now let's say read this report from government and write a news article in Hindi that covers all the important points from this report. Now if I do in Hindi, now this is going to write in Hindi. As you can see. Oh, it wrote in Marathi. So one of the things that you have to do is, if you're asking to write in Hindi, you have to give the instruction in Hindi. So let's do, currently it's doing something that, let me just refresh. So now what you can do is, so sometimes people, so basically like, you don't even have to give this instruction in English. So you can actually give this instruction in Hindi itself. So you can say like, hey, you know, मैं जी न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ, सरकार की इस रिपोर्ट को पढ़ें और हिंदी में लिखें. And now, oops, not date ID book, date. मेरे इसमें भी आ रहा था तो. Of birth, let's say gender,
date of expiry. What else do we need? Maybe the doc type, right? So let's say I need all these things. So I just define all the stuff they create, and that's it. In a few seconds, it will create an app for you, and now you can submit like millions of these documents, and it will give you like Excel. So now I say save, create an app. It's called Global ID Verification, and let's say it is called India Global ID Verification. So this is going to be used in India. Say create, and now this is going to create an app. So a few seconds, and our app should be ready. So now what you see is this app has become ready, and I can test this app by passing like multiple of documents, which could be driver license, could be passport, could be ID card, could be whatever, and from any country, any format, any state, doesn't matter. And now what you will see is, now it's running on these documents. It will take a few seconds. So this is done, and as you can see here, now even though I gave the passport as an example, as an input, and when I pass some driver license from some random states, right, it's still being able to extract all the information that I care about. Now I can pass like anything, and under the hood, what it's going to give me is an Excel file that, as you will see here. So now I have basically all of these things extracted into nice Excel. I passed like these hundreds of documents and automatically did that. I don't feel like we have to do all this manually, right? It's a lot of work. So it gives you a good sense of like what this AI stuff lets you do, right? So now look at this. It basically tells you three companies have submitted on pitch deck. Here's what A to B does, what Carta, what Pave. So this was the multi-document question answering that I was talking about. So let's go back to the deck. So just to recap, we talked about 3 different products, right, on AI Hub. The number one was Converse, which basically means you can gain insight by having interactive conversation with your content. So you can put any number of stuff, you can ask any question, AI will do that for you. Second, Build, which is you can build repeatable end-to-end workflows and solutions. Third one is Apps, which is set of pre-built AI apps. You saw the translation, right? I passed my presentation and it gave me presentation in Gujarati. So this was a pre-built app, and you can build more. We built one which we called Global ID Verification. So those are basically pre-built apps. So these are the 3 key components of this platform called AI Hub that anyone can use. And this is being used widely across so many different industries like banks, insurance, government, healthcare, consumer and products, basically CPG, the consumer goods. So, and for so many different use cases, like how do you do invoice processing? You pass invoice and PO and purchase order, go to AI, and AI will do that for you. So now no humans need to go and look at those things. Insurance claim processing, like when your bike, gets an accident, and if you have to claim insurance, they take months, right? Because they have to process so many things. You can pass all that stuff. AI can do that almost immediately. So like the whole service, the quality of service goes up. Loan processing, when you apply for loan, you have to go so many times, submit so many different documents. Now AI can do all that, right, immediately. See, banks can do this like very quickly. Trade, when you basically transfer a lot of stuff from different countries, it's just a lot of paperwork that has to be done that AI can do. Client onboarding, KYC, know your customer, like how many times to the bank you have to submit like this proof and that proof. AI can do all that. Mailroom automation, like whenever you apply to support, submit a bunch of documents, when human comes, AI can do all that stuff. So what we have seen is like almost all of these big business processes can significantly be automated by using artificial intelligence, and Instabase gives you the toolkits and the platform so that all of these things can be done. And this is what we have seen already across all of our customers. And government, right? Like why government takes so long for doing things? Because currently it's very manual, takes huge amounts of time, which can significantly be reduced. These are the examples, like we are saying at our customers, like for example banks, right? Like
if you manually process all the emails, so slow to get your response. Like if you tell some complaint over email to your phone service, the reason why they take long period of time is because some human has to go into it. हिंदुस्तान के डिजिटल लिखे थे कि हम चाहते हैं कि इतने लेट आने में क्यों हुआ, इस अच्छे प्रोजेक्ट आने में क्यों लेट हुआ, ये जानना ये जो टेक्नोलॉजी है जनरेटिव एआई, ये काफ़ी रीसेंट टेक्नोलॉजी है। तो जो इसका जो पहला बिग कमर्शियल प्रोजेक्ट आया वो लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में आया। हमने अराउंड अप्रैल और अराउंड एंड ऑफ मई अर्ली जून लॉन्च किया था ये, और उसके बाद हमने इंडिया में उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था एक्चुअली। तो जो इनिशियल जो टेस्ट किया था हमने इंडिया में वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर के साथ किया था, लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट को एंटरप्राइज ग्रेड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि बड़े बड़े बैंक यूज कर सकें, ऊबर यूज कर सके, सिटी बैंक यूज कर सके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड यूज कर सके, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जो है वो हमने 5-6 महीना वो टाइम लिया, क्योंकि उसको हम सिक्योर बना सकें, जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन कर सकें, जिससे कि आपका डेटा सिक्योर रह सके, और उसके बाद हमने जो है 5 महीने के बाद रिलीज़ कर दिया दुनिया के लिए। तो मेरे हिसाब से जो है 4-5 महीने का टाइम लेना, जिससे कि लोगों की प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इन सब को जो है इन सब के ऊपर टाइम दिया जा सके, इन सब को जो है प्रॉपर बनाया जा सके, जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सकें कि उनका डेटा सिक्योर रहेगा, डेटा बाहर नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या कहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या है एक्जेक्टली, क्या आपने पेश किया है और कितना अलग है? तो ये प्रोडक्ट के पीछे 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जनरेटिव एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी, कि क्या जैसे कि बड़े बड़े बैंक, यदि आप उनको डाटा देते हैं तो वो डेटा बाहर नहीं भेज सकते। आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि आप बैंक के साथ काम करते हैं कि आपका वो डेटा किसी और को ना दे रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हमें उनको सपोर्ट करना है तो हमको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के रन करना होगा। डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, डेटा जो है हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए। वो आपका जो है डेटा किसी और के मॉडल को ट्रेन करने में नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। आपका जो डेटा है वो जो है क्या कहते हैं, हम खुद ट्रेन ना करें, उसके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू ऑल द कैपेबिलिटी दैट यू सॉ। वो इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी लोगों का क्या है कि आप सिंपल जो है इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो तो वो जो है दे देगा, लेकिन वो डेटा जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, जो गारंटीड करे कि जो है जो आंसर है वो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर से ही आंसर हो, तो वो सारी गारंटी जो है ये प्रोडक्ट देता है। किस लैंग्वेज में रहेगा, लैंग्वेज वगैरह आपको पता है? तो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे लैंग्वेजेज में जो है अवेलेबल है। तो आपने अगर डेमो देखा तो उसमें मैंने जो है डॉक्यूमेंट इंग्लिश में था और सवाल गुजराती में पूछा, और डॉक्यूमेंट मराठी में था और सवाल अंग्रेजी में पूछा। तो ये एक अच्छी चीज़ क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कि आपका जो लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारे जैसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, उसमें जो वर्ड्स होते हैं बहुत सारे मीनिंग अलग हो जाते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? हाँ, तो मैं बताता हूँ। तो जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी जो रही है इसके पहले की, वो क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके अगर कुछ गलतियाँ हुई तो एक सेंटेंस में वो गलतियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव एआई जो टेक्नोलॉजी है वो पूरे कॉन्सेप्ट को समझता है बेस्ड ऑन पूरा इनपुट, जो सारा जो इनपुट दिया है आपने या पूरे डॉक्यूमेंट को, और अगर वो आपको समझ में आ गया और उसके बाद आप आंसर कर रहे हो, तो ये एक्चुअली ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ये उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल पूछें और मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दूं, तो ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि मैं पहले हिंदी में जवाब निकाल रहा हूं और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, राइट। मैं सोच रहा हूं और डायरेक्टली इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो ये कॉन्सेप्ट वैसा है। तो इसमें ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है ईच वर्ड को, इसमें क्या कर रहा है कि आपके उसको समझ रहा है और उसके बाद वो जनरेट कर रहा है, और इस वजह से जो है इसमें गलतियां कम होती है, और स्पेलिंग मिस्टेक और वो सब जो इनपुट में है वो आउटपुट में नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। सर अभी हमने वेबसाइट देखी आपकी, ऊबर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड सारा। हाँ, क्या टारगेट है आपका आगे चल के भविष्य में, ज़्यादा से ज़्यादा? तो हमारा टारगेट ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, इन सब को जो है हम मोर एफिशिएंट बना सकें, क्योंकि इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं ये जनरली किसको सर्व करती है, आप लोगों को, राइट। अगर ये सारे लोग जो है इन सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये किसका फ़ायदा है, ये आप लोगों का। जैसे आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन 5 मिनट में मिले रादर देन जो है 5 हफ्ते में, तो सबको फ़ायदा है ना। अगर आप जब इंश्योरेंस क्लेम करते हो, अगर 3 महीने के बजाय वो 3 दिन लगे, तो ये सबको फ़ायदा है ना। तो
तो हमारा क्या गोल है कि टू इनेबल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारा ये प्रोडक्ट यूज करके सारी दुनिया को बेहतर सर्विस दे सके। इतने सारे कंपटीशन सर मार्केट में, इससे कंपटीशन है। स्टार्टिंग में लोग ऑफर देते हैं, पैसा ट्रांजेक्शन करो तो कुछ ऑफर, बाद में बंद कर देता है। तो ये ऑफर आप भी दे रहे हो या बाद में बंद कर देंगे कैसे? तो हम जो है इस बिज़नेस में पिछले 7-8 सालों से हैं एक्चुअली, अगर आप देखोगे, और हमारे ये सारे कस्टमर्स हैं, हम बहुत सारे कस्टमर्स हैं पिछले 4-5 सालों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है जो हम बंद करेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में क्या है ना, आपको देखोगे हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती हैं, बाकी चीज़ों में हर साल चीज़ें महंगी होती जाती है। तो एक्चुअली जो हमारा प्राइस है और हमारा जो प्रोडक्ट है हर साल थोड़ा सस्ता हुआ है, ना कि महंगा। तो और मेरे हिसाब से वो ट्रेंड चलता रहेगा। लॉगिन डिटेल्स बताइए, मतलब किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, आपका जो वेबसाइट है इंस्टाबेस, एंड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस वेबसाइट? तो लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है बस। और चार्जेस, बिकॉज अभी जो आता है कुछ दिन चलते हैं, 3 दिन यूज़ होने के बाद फिर उन लोग चार्ज करते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, पहला 500 क्रेडिट फ्री है, उसके बाद जो है हर क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन कितने पेज के ऊपर पूछ रहे हो तो उसके लिए वो जो है 8 या 9 पैसे लगते हैं, 7 या 8 पैसे पर क्वेश्चन के लिए। लेकिन आप सोचो कि आप जो है जैसे बड़ा सा लीगल डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर जो है आप सवाल पूछ रहे हो कि बताओ इसका की मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है काफ़ी सस्ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत महंगा है। तो जो क्रेडिट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो हर क्वेरी के लिए जो है बहुत ही कम है। कितना डिफरेंट है इंस्टाबेस और चैटजीपीटी, बिकॉज दोनों एआई है। हाँ। आपको कितना क्या कुछ चेंजेस है? हाँ, तो चैट जीपीटी जो है ना वो इंटरनेट के डेटा के ऊपर लिखा गया है। तो जैसे कि आपको सवाल पूछना है कि भाई इस चीज़ का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है उसके ऊपर जवाब देता है। और चैट जीपीटी बहुत ही अच्छा टूल है। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा टूल है। उसमें जैसे गूगल सर्च आप करते हैं तो इंटरनेट से रिजल्ट देता है, राइट। लेकिन अगर आपको जो है जैसे कि आपको जो है प्रॉपर्टी पेपर खरीद रहे हो और उसने सारा प्रॉपर्टी का जो है डॉक्यूमेंट दिया, आपको गूगल सर्च से आंसर नहीं मिलेगा ना कि इसमें क्या। आप लॉयर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या नहीं, राइट। तो इंस्टाबेस क्या करेगा, आप इंस्टाबेस को अपना प्रॉपर्टी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है कि इंटरनेट के लिए अच्छे टूल हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, वो काफ़ी अच्छे टूल हैं, लेकिन कोई ऐसा टूल नहीं बनाया गया है जो कि आपके डॉक्यूमेंट को समझे और जो आंसर दे वो बेस्ड ऑन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर दे। तो वो इंस्टाबेस करता है। टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है आप लोगों ने? क्या टारगेट ऑडियंस वगैरह रखा है क्या आपने? टारगेट ऑडियंस मतलब बैंक, इंश्योरेंस, जैसे बैंक जो है आपको लोन देता है आपके डेटा के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिसाइड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपका डॉक्टर आपको मेडिकेशन देता है आपके हेल्थ हिस्ट्री के ऊपर। तो हमारे जो ऑडियंस जो हैं वो लोग हैं जो कि रियल टाइम में आपके हिस्टोरिकल जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है के हिसाब से आपको सर्विस देना चाहें, तो उसके लिए बनाया गया है ये। फीडबैक क्या मिला आपको? इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा है। तो across all the different industries, banking, insurance, government, the feedback has been great, and we are investing even more and more for all the existing customers. तो इसका फीडबैक हर जगह से, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, गवर्नमेंट हो, हेल्थ केयर हो, फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। सर अभी चैट जीपीटी के बाद जेमिनी भी आ चुका है, आपको पता ही होगा। जी हाँ। तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होती जाती है, तो ऐसे में आप किस तरह से इंस्टाबेस को अपडेटेड रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सालों के बाद ये भी पीछे चल जाएगा। हाँ, तो इंस्टाबेस, तो जेमिनी, चैट जीपीटी, ये जो सारे जो टूल हैं ये सारे इंटरनेट डेटा के ऊपर बने हुए हैं, जैसे कि आपको सर्च करना है, और वो सारे एडवांस होते रहेंगे। और हमारे पास भी जो हमारा जो रिसर्च टीम है वो हमेशा बेंचमार्क करता रहता है उसके हिसाब से। तो ये जो फील्ड है, ये हमने जो है ये जो मॉडल जो है हम लोग हर 2 हफ्ते में नया जो है बदलते रहते हैं। तो मतलब जो अगर AI हब जो प्रोडक्ट देखोगे हर 2 हफ्ते में हम लोग अपडेट करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल पे रहे जहाँ पे बाकी सारे टॉप क्लास प्रोडक्ट्स हैं। बात होती है, इससे भी मिस्टेक की बात हमारी एक रिपोर्टर ने की, कितना परसेंट आप कह सकते हैं कि ये 100% सही एक्यूरेट रिजल्ट ही देता है, या कुछ तो होगा ना, कुछ 19 तो होगा। हाँ हाँ, जैसे देखो कोई भी, इवन अगर आप इंसान को भी बोलोगे, लॉयर को भी, वही गलतियाँ तो करते हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि गलतियाँ नहीं करता। अगर आप किसी को टाइप करने बोलते हैं वो भी मिस्टेक करते हैं। तो हमने जो देखा है टिपिकली जो है, जो इन जनरल जो है, जो हमने जब बेंचमार्क किया है, तो फॉर मोस्ट बेसिक स्टफ लाइक ये ह्यूमन से ज़्यादा बेहतर करता है, मतलब 97-98%। लेकिन ऐसी अच्छी भी बात क्या है इसमें कि अगर जो है इसको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये आपको गलत आंसर नहीं देगा। ये बोलेगा कि भाई आई कैन नॉट आंसर यू दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट हैव द डेटा अवेलेबल। तो ये बोलेगा कि नाउ
I give up and you have to do it yourself. So ये particularly एक ऐप टाइप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, राइट? इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें ट्रांसलेट कर होता है या कुछ जैसे मुझे कुछ बनाना है, कुछ मेरे पास है नहीं बैकअप, तो कुछ बनाना प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वैसा कुछ बना सकता है? हाँ, हाँ। हम अगर टाइप करेंगे करेक्ट। तो एक डालना पड़ेगा। हाँ, तो एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि एक्चुअली काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रांसलेशन। ये ऐप का ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा ये ट्रांसलेशन ऐप नहीं है, ये ऐप आपके डॉक्यूमेंट या आपका डेटा को समझता है और उससे आप जिस किसी भी लैंग्वेज में सवाल पूछो उसमें आंसर देता है। तो ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं करे, समझ रहा है चीज़ें और उस आंसर बेसिकली अंडर द हुड क्या हो रहा है कि इट हैज़ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी एंड देन बीइंग एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन। आप आंसर आप किसी अलग लैंग्वेज में पूछो तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन हो गया, तो आपको ट्रांसलेशन जैसा लग रहा है, लेकिन द कैपेबिलिटी क्या है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंटेंट। और आपने कहा ऐप भी बनाता है ये। हाँ, तो ऐसे बोलोगे कि भाई ये रिपोर्ट पढ़ो और मेरे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएगा। मॉनिटरी इसको किस तरीके से किया जाएगा? बताया कि जो है पहला 500 क्रेडिट फ्री है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसके बाद जो है पर क्वेरी का 1 सेंट चार्ज किया जाता है। वैसा है। सर आप लोग से क्या चाहेंगे, जैसे आपने स्टार्ट किया कैसा ये सफल रहा और अभी किस तरह से AI इंडिया में कितना आगे बढ़ रहा है? तो हमने काफ़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से बात की एंड वी आर वेरी इनकरेज्ड बाय सीइंग हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ AI। सब लोग AI अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर कस्टमर सर्विस कर सके, उनका कॉस्ट भी कम रहे और नई नई चीज़ें दे पाए। तो वी आर सीइंग लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑल ऑफ दिस एंड इंडियन कंपनीज आर गोइंग अहेड ऑफ द कर्व। वी थिंक we have all the right ingredients in India, we have the right people, we have the right technology, we have the right funding capabilities. तो फिर इंडिया के लिए तो sky is the limit and I think that we're excited to partner with Indian organizations to adopt AI. So tell us what your journey and आपका situation क्या है? आई थिंक AI हब सबके लिए, आप जिससे पूछ रहे थे टारगेट ऑडियंस, तो मैं ये बताऊंगा कि आज आप ही लोगों ने डेमो देखा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप घर पे जाके तो खुद एक बार इसको पक्का से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी यूज़फुल है। तो मैं ये मानता हूं कि ये हर इंसान के लिए यूज़फुल है, क्योंकि आपके वो सबसे पहले तो भाषा के बैरियर को तोड़ता है, और ऑर्गेनाइजेशंस छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, क्योंकि हम सारे सिक्योरिटी कंप्लायंट हैं, आपके डेटा को सिक्योर और सेफ रखते हैं, ये सबके लिए यूज़फुल है। और जो आज के दिन में स्टार्टअप्स हैं उनको अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए बहुत ही मिनिमल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ वो अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं जब जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो। तो हम पूरे देश के स्टार्टअप, स्टूडेंट्स, मीडिया पीपल, लॉयर्स सबको एनकरेज करते हैं कि आप एक बार AI हब ट्राई करिए, इस्तेमाल करिए और फीडबैक दीजिए, आपका काम इससे आसान होगा।